now we are moving on to our final session for the day, which is a presentation on retail sales in salons by our expert Pawan Duggal. So may I please invite Pawan on stage? Okay, coming back. Are we on? Can you hear me? Everybody? Okay, hi. So let's start with welcoming everybody to the industry again. This year we are booming. This year again, it's very unlike last year. Last year we were still a little demotivated. We were still trying to figure out as an industry what we're doing, how we are going to boost. Internationally, also a lot of forecast was coming about the industry that is going to take at least 2 years, 3 years for our industry to kind of come at that pace. But India has very beautifully surprised us this year. We are seeing the thrill outside. We are seeing that shore outside what we were missing. 2019 was the last year when we had this shore and we had this chaos, and in the best way possible. The energy was so exuberant. Now this year is what we have kind of understood, that it's not going to take much time for us. Maybe this season which is coming, we are looking forward to the Diwali and all the festive seasons are coming. So I think the whole industry is very excited and embracing that season and hoping that we are going to get back to where we used to be, or maybe leap and go ahead than where we used to be. Correct? Do you all agree with me? Are you all excited for the festive season coming in terms of all the business that we see? Now, to that, there were certain changes that happened post pandemic, not just with our business, also in the behavior of clients and also in the behavior of hairdressers who used to work in the salons before pandemic, what the mindset used to be, how they used to consult, how they used to do their sales, how they used to do their product or maybe a regime, for example. Now, post pandemic, everything, because clients are going on the DIY technique, clients are going on, everything has to be on Google. Whatever the hairdresser will tell the client, they will first look down on the phone and they will type that word. If I say repair, first thing repair, Google. If I say keratin, first thing keratin repair. Now, what happens in that? We think Google has everything, correct? Today we go on Google for everything. But the problem is we don't click on the right source to know the right thing what we are searching for. So whatever we read is out of an innumerable ways of source where maybe it's true and maybe it's not. I'll give you a very simple example. Few years ago in our industry, there is this one particular name which got very famous in both ways. Okay, the name was keratin. You all are aware of this name? Everybody knows keratin. Is it good or bad? Is the word keratin good or bad? It's good, but still not very confident answers. And for some, it's a bad experience in their mind also, because a lot of people don't look at keratin as what keratin is. A lot of people associate their word not just with the protein where it essentially is, where it comes from, but it's also the product, it's also the service. So when you think of keratin service, then you are like, maybe, yes, no, ho raha hai, nahi ho raha hai. But when you look at the name protein, then you're like, no, it is very good. It is needed for your body. It is needed for your hair. You have to have keratin in your body. Correct? So that is that aspect, that confusion what is created in the market is uh, not because of the hairdressers per se. It's also somewhere the brands play in a lot of vital role, in these things. When a brand launches a keratin product, the marketing goes in the world of keratin so much that the hairdresser and the client gets confused whether this keratin is good as a protein or the keratin is a bottle which is a service which is not good for me because it is harmful. You understanding what I'm saying? Now we have to understand in terms of retail sales. Before we move forward, I think Kanishka has already introduced and spoken a little bit about me, so I would not really like to talk much about me. I don't really like to talk much about that anyway. But having said that, I've been an educator since a while now. I've been training brands. I've been launching some boutique brands in India, coming up with certain technologies, very unique technologies, unique innovations, why they are needed in the Indian market, what is the purpose of it, and how it will help the Indian geography here.
I say in India also, India is many countries in one country. Because even when you go to different geography of the same country, you find different culture, different texture, different lifestyle, different water. Everything is far different from each other. So we have to not look at the industry as a whole. When you look at the country, you also have to geographically define it, that what serves best in what geography, so that you understand your product better. Okay, moving forward. Postquam professional. I represent Postquam professional. I want to give you all a little brief about this brand, why I'm associating this year, understanding where I come from in the past. Like I said, I always associate myself when it comes to technology, when it comes to innovation, when it comes to something new which has to come to India for a better purpose for the industry. That has been my purpose all the time. This year, this time associating with Postcom for very one strong reason is that it is a 360-degree one-stop shop solution. One-stop shop solution means it will take care of your hair care products, it will take care of your hair color, it takes care of your skin color, skin care, your skin services in the salon, your beauty services in the salon. It has all the tools, all the particular things needed for your academy, needed for your salon in terms of furniture, in terms of aesthetics, caters to almost everything that you need to set up a salon, a beauty and a hair salon. It has everything. And it also is a part of a very famous brand called Jean Claude Olivier. It is a chain of salons from Spain, and we have come to India now recently, and to be expanding also in the chain of for another 2 to 3 years. We should be having at least 30 to 35 salons. Is what we're looking at. Yeah, maybe more than that. Let's see. Now, with JCU is one part of Postcom Group, but as a group, what we are looking at is to come up with that one-stop shop solution, so that today, when I have to cater to any of my sources, either I speak to an academy owner, or I speak to a new investor who wants to open a salon, or somebody who wants to have a whole setup, that they have to have an education, or they have to have a business setup as well. So, in terms of all their areas, all their aspects, we provide all your solutions, right from educating to your hairdressers, designing the courses for your academies, and also giving you all the aesthetics in terms of the products, in terms of their knowledge, and in terms of your tools and furniture as well. Yeah. So that's what we're looking at. Moving forward. Uh-huh. Okay. Okay. Moving forward, a little flashback about what our industry used to communicate. थोड़ा पीछे देखेंगे तो. So if you remember, almost 15 20 years ago, 2003 2004 5 के आसपास भी, most of the salons were categorized only in two categories. Either you have salons or you have beauty parlors and gents parlors. Correct? We had these two segments very clearly defined. And in those salons also, either, or those beauty parlors also, either there was this one brand used for all their services, कि अगर like for an ABC brand, अगर ABC brand आप यूज कर रहे हो तो आपके salon में वो सारे products ABC के ही हैं, in terms of hair also. तो कोई uni brands बहुत होते थे उस वक्त. There were a lot of uni brands salons. उसमें, sir, tell me, was there any brand which gave all aspects? अगर बात करता हूँ, for example, if it's hair related brand which solution in all aspects. वॉल्यूम नहीं आ रही, अब आ रहा है. इसको पास ला के रखो, अब तो बहुत जोर से है. हाँ, am I too loud? Is it okay? हाँ. So was it any brand which gave you solution in all aspects of hair? Like I know from my own experience, if there is a brand which is a hair brand, it would have every hair care possible, but then too it would not have certain things for scalp, or maybe it would not have care in terms of all its solutions, like the services that you give in your salon. Whatever the services are in the salon, not necessarily every brand will cater to that. Then you have to buy another product of another brand, कि अरे ये सर्विस के लिए मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है इस ब्रांड का, तो मुझे ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट. सो वी कीप दीज फिलर्स. करेक्ट? एवरी सैलून डज दैट. कोई एक क्लब सैलून भी होता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट सैलून भी होता है पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक बैक एरिया में कैबिनेट में कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दूसरे ब्रांड के वो रखते हैं, बिकॉज दे हैव टू फुलफिल द गैप्स दैट दे
the problems that they face in their day-to-day, service. Having said that, since the having said that, since the uni brand concept was so strong in India and strongly believe that hairdressers' knowledge was very limited. What happened? All the hairdressers who worked for that one brand or that one product, they always knew everything about that product. But if you ask them anything about the next product, they have no idea. I don't know. And what if the client which has come from a competition brand? Like A brand hairdresser, a client comes in from a B brand and then asks certain questions, and that person has no idea about that brand at all. How will you consult? And if you have no knowledge about consultation, how will you even move forward to give a solution at the first place? You understanding what I'm saying? मुझे अगर कोई बोलता है कि मैंने पैंटीन यूज किया, मुझे पता है पैंटीन का रिजल्ट क्या है, तो मैं एक्सपेक्ट करके बता भी सकता हूँ कि पैंटीन उन पे वर्क करेगा या नहीं करेगा. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर कोई मुझे बोलेगा कि मैंने XYZ यूज किया जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है क्या है, तो एट दैट मोमेंट आज भी ऐसे ही है कि ऐसा नहीं कि विकीपीडिया है और पूरे वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट्स बाय हार्ट हैं. देयर आर मेनी ब्रांड्स व्हिच एज अ हेयर ड्रेसर यू डोंट नो, बट एट द सेम टाइम यू टेल द क्लाइंट दैट ओके लेट मी गेट बैक टू यू, और इफ यू हैव अ पिक्चर, मोस्टली फोन पे कॉन्वर्सेशंस होती है, तो आस्क देम टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द शैम्पू बॉटल एंड सेंड इट बैक टू यू. नाउ देयर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर वेरी कॉमन in all the products. As a hairdresser should have a knowledge of the ingredients. The hairdresser should have the knowledge of the science, the brand itself. Otherwise, they get limited to the brand. And when they get limited to the brand, that is where the hairdressers get stuck in consultation. They are not supposed to. They are not supposed to only know about one brand and then try to give solutions out of that little play box that they have, at the retail space to play with. They should not do that. Their mind should be open enough that they can consult about any brand available at their retail bar. And you tell me, as a salon owner or as a business owner, does a multi-brand works better for you or a uni-brand works better for you? What do you think? Multi works better? Just in case अगर कोई दूसरे ब्रांड का कोई फिलर रखना पड़े तो, correct? Does everybody agree? Or some people are very loyalist and they want to stick to one brand and they said we don't care, मेरे को ये एक ही ब्रांड चाहिए और इसके साथ ही काम करते. ऐसा है कोई? मल्टी ब्रांड्स में बिलीव करते हो आप लोग? नॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहा है सब मुंडी. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जब मल्टी ब्रांड्स की बात आ रही थी, if you look at it, there was an era of hashtag only sold in salons. Do you all remember that era? जहाँ पे सारे brand owners hashtag only sold in salons, hashtag only sold in salons. Every brand owner used to say this only for the fear where they will lose faith, hairdressers trust, that because the hairdresser able to buy it, sell it in the salons, वो ये सोचते थे कि यार यहाँ पे हम बेच नहीं पा रहे हैं कि हम बाहर मार्केट में भी अवेलेबल हैं, क्योंकि हम एक ब्यूटी स्टोर में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम एक होलसेल स्टोर में अवेलेबल हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अवेलेबल हैं. हेयरड्रेसर्स को मोटिवेशन नहीं है क्लाइंट को सैलून के अंदर वो रिटेल करने का. करेक्ट? ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया. ये सारी प्रॉब्लम्स को ब्रांड्स ने आइडेंटिफाई किया. ब्रांड ने सोचा चलो हम एक नए तरीके से ट्राई करें. उन्होंने लाया हैशटैग सोल्ड डिस्काउंट्स कि हम मार्केट में नहीं दिखेंगे, हम आपको ब्यूटी स्टोर में नहीं दिखेंगे, हम आपको कोई भी होलसेल मार्केट में नहीं दिखेंगे, हम सिर्फ सैलून में दिखेंगे. पोस्ट पैंडेमिक में now you know that almost every online channel has all products. आप कोई भी ऐप उठा लो, चाहे वो नाइका हो, चाहे वो Amazon हो, चाहे all your professional products, they all have professional brands. The only reason why that happened is because post pandemic the dynamics of doing business change. Earlier they were allowed to be in the D2C channel. Now they are in the D2C channel, and hence a brand wants to make money, so they will be there. But what is the hairdresser's गलती इसमें? उसका क्या गलती था? आज अगर कोई ब्रांड Amazon पे है तो उसमें हेयरड्रेसर का क्या गलती इसमें कर रहा है? हेयरड्रेसर का क्या प्रॉब्लम होता है आज? आज अगर मेरे ये क्लाइंट है, मैंने इनको ये बात सजेस्ट करी कि आप ये ब्रांड का ये शैम्पू ले लो, क्लाइंट सबसे पहले फोन उठा के अपने गूगल पे जाएगा, नाम सुनते ही सबसे पहले टाइप करते हैं फोन पे, एंटर दबाते हैं, Amazon पे उसका डिस्काउंट में मिल रहा है और इमीडिएटली परचेज कर लेते हैं. हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
इसमें रिटेल बिजनेस किसका खराब हुआ? हेयर ड्रेसर का। हेयर ड्रेसर्स की आपकी पूरी सर्वाइवल उनकी कमीशन पे होती है। जितना ज्यादा बिजनेस उतना ज्यादा कमीशन, जितना ज्यादा कमीशन उतने अच्छे पैसे। अब रिटेल बिजनेस का अगर इतना बड़ा चंक आपका निकल गया, जहाँ पे हेयर ड्रेसर को वो बिजनेस अपने सैलून फ्लोर से आ ही नहीं रहा है, वो अपने दिल से कंसल्ट कर रहा है, बार बार कंसल्ट कर रहा है, हर क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा है, पर क्लाइंट क्या कर रहा है? ऑनलाइन बाय कर रहा है। ये कंट्रोल ब्रांड्स ने नहीं सोचा कभी भी कि ब्रांड्स को ये कंट्रोल करना चाहिए कि जहाँ पे ऑनलाइन बायर्स की जो टारगेट ऑडियंस है वो वहाँ पे अपनी जगह ठीक है, बट क्लाइंट का शेयर नहीं जा, हेयर ड्रेसर का रिटेल बिजनेस का शेयर नहीं जाना चाहिए इसके चक्कर में। बट since we are overly populated as a country, you can't control everything in life. There was a solution. Now the solution is where the brand, where I think personally, ये हैंड माइक दे दूंगा, ये बेटर है, ये बार बार बंद। Can you guys hear me? Can you guys hear me? Now, now, now. I have to put my mouth in the mic. Ah, now it's better. Thank you. Okay. Looking at the present day. Okay. Looking at the present day. Now what has happened? Because we have understood that every brand cannot give you solutions of everything. एक brand आपको सारे solutions नहीं दे सकता है. Hair salons got started dividing into 4 categories. We have a color category in the salon. We have a care category. We have a form category which takes care of your shapes. And then we have a styling category, which is your finish category. Now what we have identified as salon owners or brand owners or hairdressers, that for each of its own, like I have a personal product portfolio for myself, for my clients. I know I am comfortable with certain brands for certain problems. So I only consider and I only consult for those brands. हेयर फॉल प्रॉब्लम है तो आप ये यूज करो, ये नहीं है अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है। हेयर का आपका ब्लीच का आपका क्या केमिकल डैमेज है तो आप ये ट्रीटमेंट यूज करो। आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रीटमेंट पे जाओ, इस रिजीम पे जाओ। सो एवरी हेयर ड्रेसर हैज लाइक अ, पीछे उनके पास है ना सोल्यूशन का एक चार्ट होता है। अब आज की डेट में मल्टी ब्रांड्स की वजह से फायदा ये होता है कि आपके पास वो चार्ट का एक कस्टमाइज रिजीम बनाने का एक आपको जरिया मिल जाता है। वे यू डोंट हैव टू टेल कि हाँ कलर है तो आप यही ब्रांड का यही कलर का यूज करो, आप उसको कस्टमाइज करते हो। अगर वो हेयर फॉल का और उनका कलर का प्रॉब्लम एक साथ आया तो आप सीधा उसको सिर्फ कलर का होम केयर नहीं दोगे ना, फिर आप उसको हेयर फॉल का भी होम केयर दोगे और उसको आप कलर का भी होम केयर दोगे। तो आप कस्टमाइज करते हो, आपका शैम्पू अलग हो जाता है, आपका मास्क अलग हो जाता है, आपका लिव इन अलग हो जाता है। दैट कस्टमाइजेशन इज व्हाट अ हेयर ड्रेसर शुड नो। अब वो हेयर ड्रेसर कस्टमाइज कैसे करेगा? हेयर ड्रेसर कस्टमाइज तभी कर पाएगा जब उसको उसके बारे में पता होगा कि इसको कस्टमाइज करते कैसे। और कस्टमाइज करने के लिए आज इतने सारे ब्रांड्स है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, किसको क्यों सजेस्ट करना is what I feel as a hairdresser, that I've always asked this one question to all the brands whoever has come and spoken about their product. I always ask them why, what and how तो बताएंगे वो लोग कि क्या है और इसके क्या कर सकते हैं, वो तो बताएंगे, उनको बेचना है। मेरा सवाल है क्यों, why, ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर जो मुझे आपके बारे में बात करनी चाहिए, जो मेरे इंडियन की जितनी भी है मेरी जो क्लाइंटल है मेरे ज्योग्राफी के हिसाब से, वो हेयर पे ये सूट करेगा, वो हेयर पे ये टेक्नोलॉजी क्या काम करेगी, क्या ये इंग्रेडिएंट्स रियली जस्टिफाई करेंगे वो सारी चीज़ों को मेरे रीजन के अंदर। ये सारे सवाल हेयर ड्रेसर्स को पूछने चाहिए जब भी उनकी सैलून की ट्रेनिंग होती है, जब भी उनके प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग होती है। आई थिंक इवन द ब्रांड्स शुड बी मोर फोकस्ड अबाउट टीचिंग और एजुकेटिंग द हेयर ड्रेसर्स on a very general science way, you know, to make them understand the USP of the innovation, not just speak the marketing language कि this will take care of your frizz or this will take care of your damage. That everybody does, everybody says that, but how and why and what is the main purpose behind that whole innovation is what we have to understand. The moment the hairdresser starts, or the brand owners or the salon owners, they start thinking like this, their product portfolio becomes very very limited in terms of knowing and understanding to filter out from the brands which are not going to serve good to them.
and to be very selective about the brands which are actually good brands in India and create your portfolio and your solutions around those products. You understand? ये बहुत ज़रूरी है. आपको पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि आपके जितने भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस आपके आपके पर्टिकुलर बिजनेस को कितना ज़्यादा फायदा करता है, कितना फिट होता है, और उसके बेसिस पे एक कस्टमाइज चार्ट आप बनाइए सारे प्रोडक्ट्स का कि मेरे हेयर केयर के लिए मेरे पास ये ब्रांड्स हैं. इकोनॉमिकल अगर रेंज में रखना होगा तो मुझे ये प्रोडक्ट है, अगर मेरे को थोड़ा महंगा रखना होगा, सर्विस थोड़ी ज़्यादा लग्जरी देनी होगी तो मेरे पास ये भी प्रोडक्ट है. अंडरस्टैंडिंग. हर कैटेगरी को एक सब डिविजन भी करना ज़रूरी है. ओनली देन यू अंडरस्टैंड योर पोर्टफोलियो. एक ब्रांड का, एक प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है. नॉट जस्ट एक हेयर ड्रेसर को, पर एक सैलून ओनर को और एक बिजनेस ओनर को भी. उसके वजह से उनकी इकोनॉमिक्स भी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि फिर आपकी जितनी भी वेंडर्स डीलिंग होती है, आप जितनी भी ब्रांड एसोसिएशंस करते हो, आपके ब्रांड एसोसिएशंस के एक सर्टेन आपके जो अग्रीमेंट पे आप आते हो, उसके बेसिस पे आपका पूरा इकोनॉमिक्स सही बैठता है कि ये मेरी सर्विस कॉस्ट हो गई, इतना मेरा कमीशन में जाता है, इतना मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट लगता है, इतनी मेरी प्रॉफिट मार्जिन होती है, और इतना मेरा फाइनल टेक होम हो जाता है. यू अंडरस्टैंडिंग? बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू don't create this portfolio, when you don't create this chart, you're buying at any price for any brand and you're just mix matching everything, but you don't have a proper figure in your mind in terms of business what you're actually doing with those brands. Are you really making more profit than what you could have made otherwise, or you're just going with the flow and just let it happening, just the way it's happening for no reason at all? That has to be identified, and that as a hairdresser cannot identify, that a salon owner has to identify. A salon owner has to think in their mind कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह पे मेरे क्लाइंट्स को, मेरे हेयर ड्रेसर्स जो मेरी टीम है, वो कितने अच्छे क्वालिटी है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ काम करना चाहिए. यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इट हैज टू कम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेयर ड्रेसर्स माइंड, where they expect the salon owners to give them products which are as good as what they are expecting, so that the salon owners को भी एक जो आपका जो एक सिंक आ जाता है हेयर ड्रेसर्स और salon owners का, फिर हेयर ड्रेसर्स खुद ही साथ साथ एक्सपेरिमेंट करता है, टेस्ट करता है, प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू देता है सैलून ओनर को, ये हमारे यहाँ चल रहा है, ये नहीं चल पा रहा है, ये इतना रन हो रहा है, ये नहीं रन. इससे आपकी डेड स्टॉक भी बहुत बच जाती है एक सैलून ओनर की, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स तो हर चीज़ बेचेगा. आप ये भी ले लो मैडम, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, या ले लो. हर रीजन में वो स्टॉक जरूरी थोड़ी है कि वो आपका हीरो प्रोडक्ट है और वो बिकने वाला है, तो वो डेड स्टॉक भी आपका कट हो जाता है. बिकॉज हेयर ड्रेसर्स आर वेरी पर्टिकुलर, दे नो देयर स्टफ वेरी वेल. दिस इज व्हाट आई बीन सेइंग टू पीपल. हेयर ड्रेसर्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार उनको आप एजुकेट कर देते हो ना, ये चार्ट कैसे बनाना है, ये डिफरेंशिएट कैसे करना है, दे आर सो गुड एट इट दैट दे विल सेव सो मच मनी ऑफ अ सैलून ओनर, which a salon owner will be forever grateful for, because a lot of that stock gets taken care of. Now miscommunication I've already discussed about what is वो protein और keratin की बात लेके, the product is something, it means something else, but just because it has come in a certain formulation which is bad to us, it becomes a villain for no reason. और हमारे इंडिया में एक आदत बहुत बुरी है कि एक चीज को हीरो बनाने के लिए एक को विलन क्यों बनाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता. जिसको हीरो बनाना है उसको हीरो बनाओ ना, जिसको हीरो बनाना है उसके हीरो की बातें करो अच्छी अच्छी. किसी और को विलन बनाने का क्या मतलब था कि दिस इज बैड, दैट इज व्हाई दिस इज गुड. दैट शुडंट हैपन. इफ समथिंग इज गुड, लेट इट बी गुड, and let it be good on its own merits, on its own best qualities, because something else, if that is not as good as this, it's not bad, it doesn't make it bad, it's just not fitting your purpose. आपके रिक्वायरमेंट को फिट नहीं करता, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. You understanding? So look into brands, look into products, check your portfolio, create that chart for your better business planning for future businesses that you do, with the salon. Now multi brand और uni brand के लिए सबने हाथ उठाओ जिन्होंने नॉड किया था स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा था what do you prefer, you should have multi brand products or you should have uni brand products. मल्टी ब्रांड वाले कितने थे? मैं तो हमेशा हूँ. काफी हाथ आ रहे हैं ऊपर, कुछ यूनी वाले लॉयलिस्ट भी हैं बट कोई बात नहीं. मल्टी ब्रांड वाले जितने भी यहाँ पे हैं, when you look at this, do you agree to this points that we bridge the gap between all the problems that we face? Do we agree to that or no? With multi brands we kind of bridge that gap, so it's easier for us. The pandemic era, which we discussed already, the problems that we faced after the pandemic was the whole online sales, to which till today the hairdressers are suffering. आज भी hairdressers suffer करता है उसके retail business पे.
वो रिटेल बिजनेस का उसका प्रमोशन नहीं है, उसका वो बूस्ट नहीं है, वो बूस्ट वो सैलून ब्रांड एंड सैलून ओनर एंड द ब्रांड ओनर दोनों को मिलके दे हैव टू कम एंड बूस्ट योर हेयर ड्रेसिंग। दो तरीके हैं करने के। सैलून ओनर अपनी तरफ से स्टाइलिश कमीशन देता है आपके प्रोडक्ट रिटेल पे, पर ब्रांड ओनर्स को भी ना जब कि एक इवेंट करे और खाली वो एक सैलून बिजनेस के सैलून ओनर के लिए कुछ इवेंट करे, बट आई होप दैट ब्रांड ओनर्स आर लिसनिंग टू दिस and they take this very seriously, that hairdressers incentive not just in monetary gains but in terms of a lot of support a hairdresser needs, not just education about that particular product, but in terms of education on a larger scale, education on a global scale, education on the level where it is a universal language. That is very important. And I think that is something which the brand owners should focus for hairdressers so that hairdressers can focus towards the business that they do. That is what I believe. And moving forward, I am just closing in with the last perspective that I personally feel that hairdressers can only do good business, good retail business to you, for you, and for themselves if they are well informed about all the tools they have, all the weapons that they can play with. वो अपना जो चार्ट बनाएंगे पीछे, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे वो बिजनेस में, whatever they will have, let them create that regime for. Let them tell the client कि एक दिन में जादू नहीं होता है, एक वॉश में समझ में नहीं आता है. You have to go on at least 3 months regime. हम हेयर फॉल की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि हेयर को भी 45 डेज लगता है ग्रो करके बाहर दिखने के लिए, टाइम देना पड़ता है ना. तो हेयर ड्रेसर जब एक प्रोडक्ट रिजीम को जब आपको सजेस्ट करता है, तो वो हेयर ड्रेसर के लिए इमीडिएटली क्लाइंट आके नहीं बोल सकता अरे मैंने आपका ये शैम्पू दिया था, मैंने परसों यूज किया, मुझे अच्छा नहीं लगा. हेयर ड्रेसर हैज टू मेक देम रियलाइज दैट वो एक बार में जादू नहीं होने वाला. यू हैव टू कीप दैट रिजीम फॉलोड एटलीस्ट फॉर मिनिमम 90 days for any change to happen, any good to happen, and if then things work well and good, then you don't have a problem at all. Then the client also starts believing the hairdressers. फिर वो गूगल को जाके पढ़ना छोड़ देगी, फिर वो उसको बिलीव करने लग जाएगी जो उसके बारे में एक्चुअल हेयर एनालिसिस अच्छे से करके गाइड करके एक राइट प्रोडक्ट दिया, क्योंकि द हेयर ड्रेसर हैड द पावर to customize that product, to customize that regime because of the multi-brand, and then that person can give the solution. A lot of clients go to a lot of salons and they keep doing their spas for 5 years, 10 years. Hair spa chalta ja raha hai, chalta ja raha hai, chalta ja raha hai. But that repair has never happened because there is some miscommunication which is happening. If spa is so good for you and you can get your hair repaired in 6 sittings, then why are you doing 600 sittings at the end of the year? You understanding what I'm saying? हम बोलते हैं ना, हेयर ड्रेसर्स बोलते हैं, मैं तो अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ मैडम 6 सिटिंग में आपके बाल थोड़े हेल्दी हो जाएंगे. और वो 6 सिटिंग के बाद अगर वो सेम ही दिखने वाले हैं, देन व्हाट वाज द पॉइंट? एंड आई सेइंग से 6 सिटिंग में सही हो जाएंगे, दैट मींस दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल टू फॉलो. यू हैव टू डू अ सर्टेन रिजीम एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. आप उसको आज एक स्पा दोगे, दूसरे स्पा की सिटिंग उसको 3 महीने बाद की दोगे, तो क्या वो हेयर कभी रिपेयर होगा? ये लॉजिक है, ये सब जानते हैं कि जिस दिन सिटिंग किया उसका वॉशेस तो 4 वॉश में खत्म हो जाएगा सब कुछ, करेक्ट? अगर वो क्लाइंट आएगा 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दूसरे सिटिंग का, सो इट्स लाइक अ रीस्टार्ट फॉर दैट क्लाइंट, नो अगेन लाइक अ फर्स्ट सिटिंग. वो लूप पे रहेगा जिंदगी भर, वो कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा. सो हेयर ड्रेसर्स कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्लाइंट को हम बोलते नहीं है, हेयर ड्रेसर्स डोंट कम्युनिकेट लाइक दिस. वो नंबर ऑफ डेज में बताते हैं, मैडम आप 2 हफ्ते में एक बार आइए, मैडम आप 1 महीने में एक बार आइए. वो क्लाइंट बोलता है हाँ 1 महीने में ना, 1 का 2 भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? So वो कैजुअलिटी जो कैजुअल बिहेवियर जो आता है, where the hairdresser should say instead of saying 2 months, hairdresser should say मैडम आप 5th वॉश में आइए, मैडम आप 6th वॉश में आइए, 7th वॉश में आइए. Then they are consciously aware. Then the client is like, oh he asked me to come in the 5th wash. That means if next week if I'm finishing my 5th wash and if I don't go to the salon, I should not expect my hair repair as per what he said to me. You understanding? That communication gap, which is just a mere change of statement. Instead of saying days, just say number of washes and see the difference in your life. All my clients till today, they follow my regime and they follow for each and every wash that I tell them, only because I keep telling them that number of washes is what you have to focus on, not number of days. You understanding? And that's very important. As a hairdresser, they should first have the knowledge. They should have like a product portfolio behind them to play with all the solutions that they can, and the communication that they give out has to be very, it's still an honest communication कि इतने दिन में आना है,
वो आप नंबर ऑफ डेज में आप बाद में गिन देना कि आपके 5 वॉश कितने दिन में होने वाले हैं, वो सेकेंडरी है. बट आइडियल फर्स्ट कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज इन द नंबर ऑफ वॉशेस. ठीक है. सो आई थिंक the only way to do that is to educate and educate and educate. And the more education that we do, the more upgradation that we do. Every year इतने brands आते हैं, इतनी innovations आती है, इतनी technologies आती है, इतना नया कुछ science आता है. Every year there is something or the other which keeps coming. I would only recommend the hairdressers that know one thing: knowledge is power. You can't just know everything and after 10 years say that मेरे को 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, मेरे को अभी सब आता है, क्योंकि 11वें साल में जो आने वाला है उसका आइडिया तुम्हें नहीं है. So you have to constantly update, and for that you have to constantly be upfront and go in academies and go upfront and say कि सुनो मैं 10 साल से अभी इंडस्ट्री में हूँ, मेरे को अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझना है, आपके पास कुछ है तो समझा दो. करेक्ट. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे को एडवांस कोर्स ही करना है. ये एडवांस कोर्स का दिमाग में हेयर ड्रेसर जो अपनी डाल देता है और फिर वेट करता है कि जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करूंगा, वो कभी हो ही नहीं पाएगा. तो एडवांस कोर्स दिमाग में नहीं रख के खाली अपग्रेड कब करना है. 2 दिन का अपग्रेड है, फटाफट जाके करके आ जाता हूँ. 1 दिन का अपग्रेड है, फटाफट जाके करके आ जाता हूँ. ये करने से आप रेगुलरली जब अपग्रेड रहते हो ना, फिर वो आपके दिमाग का जो सोचा वो आइडिया था ना, एक दिन एडवांस कोर्स करूंगा, वो एडवांस कोर्स करने का कभी वो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड. वो बहुत जरूरी है. And that can happen only with education. I would plead all the brand owners and the salon hairdressers that please focus on education from both front. The more you educate your hairdressers, the more business they are going to give to you, because they will have more options to play with. वो ज़्यादा खेल पाएंगे, उनके पास ज़्यादा उनके हाथ खुलेंगे, तो उनको आइडिया होगा. They'll do better things for you. Correct. So that's how, and that's all I want to say for today's the entire session that we have. I'm very grateful that you guys are very patient and very kind to sit quietly and smile at me and give me good energy like that. Very sweet of you all. And before we move forward, if you all still want to understand about that one-stop shop solution, that how you can go about for your hair care, your skin care, your aesthetics and everything, I am here. We have a team back. Whatever you want, we have all the information. We can provide you all the information. And also we are going to help you before you all leave with a contact number where you can contact us for your future education and for your association in case you all want to have any. Okay? With that, I'm going to close now. And thank you very much for listening to me. And I'm going to see you guys soon. God bless you. Thank you so much, Pawan. Can you hang on for 2 minutes? I'll just take some questions from. Yes, if there are any questions from the audience for Pawan about his presentation and his subject, we can quickly take a couple of questions. Any questions? No, everything was clear. Wow. I think I covered almost everything. Yes, but like he said, he's available right now at the show, so you can catch up with him offline. And before you go, Pawan, I would like to give you a token of appreciation. Thank you, guys. And with that, we come to the end of the spectacular Salon Management Congress 2022. All the registered members, delegates will receive their certificates via email. We are going eco-friendly this year, so it's going to be e-certificates for all of you. Please go through the exhibition. We are celebrating 10 years in India, and we have lots of new things lined up for you. So please have a look at the exhibition and visit all the stalls. And all the best to you, and I'll hope to see you soon. Thank you. Thank you for being a wonderful audience. Thanks a lot.